यस गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएबल फंक्शंस की। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। लेट अस सी फ्यू क्वेश्चंस मोर। क्या दिया गया है? लेट a and c be real numbers with c is a positive, c is positive real number and f be defined on closed interval -1 1 like this. F is defined like this on this interval. F of x is equal to x raised to a sin 1 upon x raised to c. When x is non-zero and 0 when x is equal to 0, then we have to show that f is continuous at 0 if and only if a is strictly greater than 0. So let us show first of all continuity at 0. We know that at non-zero point this function is continuous because 1 upon x has no problem to be continuous if x is non-zero, right? Now f is continuous at 0. Number 1, f is continuous at 0 if and only if what? If and only if this limit exists. If and only if limit x tends to 0, f of x is equal to f of 0. This is the definition of continuity. We are just simply applying. This is if and only if limit x tends to 0. What is f of x? F of x is x raised to a sin 1 upon x raised to c. This should be 0. F of 0 is 0. So this limit should be 0 and we know that this limit is 0 if and only if a is greater than 0. By sandwich theorem, right? What we know is this function is bounded. Sin -1 is less or equal sin 1 upon x raised to c is less or equal 1. So if you multiply this quantity by x raised to a, what you will get? You will get x raised to a this, let me write directly, fx is less or equal x raised to, and if a is positive then this both will go to 0 as x tends to 0, right? So a has to be positive. If a is equal to 0 then also this limit does not exist. So f is continuous at 0 if and only if a is strictly greater than 0. Next says that f is differentiable at 0 if, let us take differentiability, f is differentiable at 0 if and only if what? This limit exists, limit h tends to 0. What we want? F of a plus h means 0 plus h minus f of 0 upon h, because a is equal to 0, right? So this if and only if limit h tends to, this exists, right? F is differentiable at 0 if and only if this limit exists. Means this, what is f of h? F of h is h raised to a sin 1 upon h raised to c divided by h. F of 0 is 0. This both will get cancelled again. This is same as limit h raised to a minus 1 into sin 1 upon h raised to c, right? So this limit exists if and only if this limit exists, and we know that this limit exists if and only if this quantity is positive according to this. So this is exists if and only if a minus 1 is strictly greater than 0. This is if and only if a is strictly greater than 1. Means this function is differentiable if a is strictly greater than 1, right? Next one, f dash is bounded. So let us find f dash. What is f dash? Let us check. So f dash exists if a is greater than 1, and what is f dash 0? At 0 it will be 0, because if you take limit h tends to 0, this limit will go to 0, and at non-zero points we have to check. At non-zero points, what is f dash x? Let us see from here. If x is non-zero, then derivative of this. So we have to apply multiplication rule, right? This is a product of two functions. So this is a x raised to a minus 1 into sin 1 upon x raised to c plus derivative of first, second as it is, now derivative of second, first as it is, x raised to a as it is. Derivative of sin is cos 1 upon x raised to c, and derivative of x raised to minus c is minus c 1 upon x raised to c plus 1, something like this, right? So in fact this is what? A x raised to a minus 1 sin 1 upon x raised to c plus x raised to a minus c minus 1. This is c plus 1 and this is a power. So subtraction will be a minus c minus 1 into minus c as it is into cos 1 upon x raised to c. But now we know that
this sine function is bounded, cos function is bounded. So if you want f dash x is bounded, this power should be positive, and therefore f dash is bounded if and only if a minus 1 is positive or equal to 0. It can be 0. If a minus 1 is 0, this term will not appear here, right? And a minus c minus 1 should be greater or equal 0. This will imply a is greater or equal 1 and a is greater or equal c plus 1, means this has to be happen because c is positive, right? अगर ये होगा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, दोनों होना चाहिए. So a is greater or equal c plus 1 के लिए this is differentiable. Now what it says, f double dash 0 exists if and only if a is greater than. So we know that this is what? This is f dash x. This is f dash x when x is non-zero. And what is f dash 0? It is 0. We have seen earlier. At x is equal to 0, derivative of f will be 0. So now let us try to find f double dash 0. What is the definition of f double dash 0? Now f double dash 0 is nothing but limit h tends to 0 f of f dash of, it is the first derivative of f dash, right? F dash of a plus h means 0 plus h minus f dash of 0 divided by h, and this is what? This is again limit h tends to 0. You can say f dash of h, this is 0 plus h means h, f dash of h, from here you will get a h raised to a minus 1 into sine 1 upon h raised to c plus h raised to a minus c minus 1 into minus c into cos 1 upon h raised to c. F dash 0 is 0. This whole quantity is divided by h. And this is what? This is again limit h tends to 0. A h raised to a minus 2 sine 1 upon h raised to c plus h raised to 1 power here, so a minus c minus 2 I am giving separately, h separately डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर में और h सेपरेटली इसको डिनोमिनेटर में. यहाँ पर आप ले जाओगे तो a minus 1 minus c minus 1 divided by h means a minus c minus 2 into minus c into cos 1 upon h raised to c, right? So now this limit exists, this h tends to 0, this limit exists if and only if what? This exists if and only if this h की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, a minus 2 should be positive and a minus c minus 2 should be positive, then only this limit will exist. अगर ये नेगेटिव पावर हो गई तो ये डिनोमिनेटर में इफेक्ट करेगा, right? So this is if and only if a is greater than c plus 2, right? So this one. Okay, let us see next problem. What is that? Wow. In the next problem it says that check differentiability of the following functions. Function दिया गया है fx is equal to x square mod of cos pi by x when x is non-zero and 0 when x is equal to 0. At 0 we have to check differentiability of this function. Okay, so we have two ways. What we will do is, let's go directly by definition. From left hand side and from right hand side we have to evaluate this limit. Okay, so here let us calculate this limit. Limit h tends to 0, f of a plus h minus fa upon h, right? Whether this limit exists or not, so this is limit h tends to 0. What is f of h? It is h square into modulus of cos pi upon h minus f of 0 is 0, it is given, divided by h. So h will get cancelled, this is limit h tends to 0, h will get cancelled, so h cos pi upon h, and we know that this is a bounded function, so using what? Sandwich theorem, this limit is 0, right? And therefore f is differentiable at 0. F is differentiable at 0, and what is f dash 0? F dash 0 is 0. Okay, next function ऐसा कुछ दिया गया number 2. It is defined like this: f of x is equal to, how it is defined?
It is tan inverse x if mod x is less or equal 1. It is tan inverse x if mod x is less or equal 1, and pi by 4 signum of x plus x minus 1 by 2, ऐसा कुछ है. Pi by 4 into signum of x, pi by 4 into signum of x plus x minus 1 by 2 if mod x is strictly greater than 1, right? इसके कॉम्प्लीमेंट में है तो ऐसा है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x is equal to plus or minus 1. Okay, so let me write this function again. What we do is, it is like this: f of x is equal to, suppose we will divide -1 से छोटा है x, x is less than -1. कितने पोर्शन पड़ेंगे, कितना पार्ट्स पड़ेंगे? यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 है, 1 से बड़ा, -1 से छोटा, -1 1 से बीच, राइट? अगर -1 से छोटा है तो mod x will be greater than this, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? pi by 4 times, what is signum of x here? If x is less than -1, signum of x is -1, so let me write minus pi by 4 plus x minus 1 by 2 whenever x is less than -1. Okay, whenever x is in between -1 and 1, what it will be? It will be tan inverse x. Okay, whenever x is greater than 1, then again here, if x is greater than 1, then mod x is greater than, then signum will be plus 1. So this function will be pi by 4 plus x minus 1 by 2 when x is greater than 1. We can check differentiation directly. You can go through definition also, but we can check directly what is f dash x. F dash x is equal to, here differentiation of minus pi by 4 is 0, x by 2 का डेरिवेटिव 1 होगा when x is less than -1. डेरिवेटिव ऑफ tan inverse x is 1 upon 1 plus x square when x is in between. See, यहाँ पर हम लेस और इक्वल नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें चेक करना होगा -1 के ऊपर क्या पोजीशन होती है, +1 के ऊपर क्या पोजीशन होगी. If you differentiate this function, derivative of pi by 4 is 0, derivative of x by 2 is 1 by 2, so this is whenever x is greater than 1, and therefore what is f dash at -1? -1 from left side, right? F dash -1 from left side, so I am writing minus here, so it will be 1 by 2, and f dash of -1 from plus side, -1 के ऊपर plus side से आ रहे हो, so it will be 1 upon 1 plus -1 square. Again it is 1 by 2. Both are same. Therefore f is differentiable at -1, and f dash of -1 is how much? F dash of -1 is 1 by 2. Similarly, you can see here at 1 it is 1 by 2, at 1 it is 1 by 2, from left side it is 1 by 2, from right side it is 1 by 2. So this function similarly f is differentiable at 1 also, and what is f dash 1? It is again 1 by 2. So this function is differentiable on all of R, right? Next दिया गया है, so now you do this is an exercise number 3. क्या दिया गया है? x square e raised to minus x square, f of x is equal to x square e raised to minus x square, ऐसा दिया गया है if mod x is less or equal 1, and और क्या दिया गया? 1 by 2 if mod x is strictly greater than 1. इसके जैसा ये आपको स्प्लिट कर दो इसको, and then check at end points. You have to check at x is equal to plus or minus 1, right? You have to do this is an exercise. X is equal to plus or minus 1. You have to check whether this function is differentiable or not. Number 4 दिया गया है f(x) is equal to x into mod x when at x is equal to 0. You can check this, right? If x is positive, mod x is x, so this will be x square when x is greater or equal 0. This is minus x square when x is less than 0. Now you can differentiate like this, and you can check whether this function is differentiable or not. Okay. नेक्स्ट नंबर 5 में ऐसा फंक्शन डिफाइन किया है f(x) is equal to, this has been asked in one of the exam, box x into sin square pi x, box x into sin square pi x.
check the differentiability at each integer. Okay, so let us do this one. We know that this is what? This is nothing but box x is equal to n. This is sine square pi x if n is less or equal x is less than n plus 1. Right? This is just definition. It means what? It means you can write like this also. मैं इसको मुझे अगर n के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो मैं ऐसे लिखूंगा n माइनस वन लेस और इक्वल x स्ट्रिक्टली लेस देन n. x अगर n माइनस वन और n के बीच में है तो बॉक्स विल बी n माइनस वन. सो दिस विल बी n माइनस वन साइन स्क्वायर पाई x. और इसके बीच में है तो व्हाट वी विल राइट इट इज n into sin square pi x. Now it is easy. Now if you want to check differentiability and n is an any integer, then differentiate this, put n at both places. If it is the same, then function is differentiable, otherwise it is not differentiable, right? Okay, let us do that. In fact you can check continuity. Is this function continuous at n? If you take x is equal to n here, then it will be sin pi x here, so it is 0. If you put n here, it will be sin square n pi. It is 0 again. So both limit, left hand limit and right hand limit and at n is same. So function is continuous at n. So we have to check differentiability. If it is not continuous at n, then we can directly say that this function is not differentiable at n, right? So now let us differentiate this. Therefore, what is f dash x? F dash x will be, see, n minus 1 is a constant. Differentiation of sin square is 2 sin pi x into cos pi x into pi. पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 आगे आएगा, साइन का डेरिवेटिव cos and pi x का pi. When n minus 1 is less or equal x is strictly less than n. Now differentiate this thing, n into sin square pi x, it will be same n into 2 sin pi x into cos pi x into pi when n is in between what? Less or equal नहीं लिखेंगे हम n plus 1. So if you want to check derivative at n, therefore f dash n from minus side, from left side, what you have to take? In this one you have to put n in place of x, so you will get n minus 1 2 times sin n pi into cos n pi. Sin n pi is 0, we know that, so this is 0. Similarly f dash from plus side, so you have to substitute here 2 sin n pi into cos n pi into pi. Sin n pi is 0, therefore f is not differentiable at each n belongs to z. At any integer this function is not differentiable. In fact this function is continuous everywhere. Another function is given by the same. You have to check this whether this function is differentiable or not. It is defined like this: f of x is equal to fractional part of x, x minus box x, sin square pi x, sin square pi x, only one, yes, when x belongs to r, for each x belongs to r. Check whether this function is differentiable or not, right? So one thing is clear: at every non-integer number, this function is differentiable, right? Or you can write like this: this is what? This is nothing but x minus box x sin square pi x, right? Okay, you can separate this. This is x into sin square pi x minus box x into sin square pi x. We have seen that box x into sin square pi x, this function is not differentiable at k pi. Not differentiable, right? This is differentiable on r. This is differentiable at k pi. This is not differentiable, so subtraction cannot be. एक differentiable है, एक नहीं है, तो addition और subtraction differentiable नहीं हो सकता. Therefore, directly you can say that f is not differentiable on k pi when k belongs to z. Right? समझ में आ रहा है? Okay, let's go ahead. Again, this is a nice question.
ये भी पूछा गया है, दिस हैज बीन आस्क्ड इन वन ऑफ द एग्जाम, नेट एग्जामिनेशन इन फैक्ट। डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया गया है, लेट अस सी हाउ इट इज डिफाइंड। Take the closed interval 0 1 and open interval 1 by 3 minus 2 by 3, set k is equal to this. So this is a question. Let k is equal to, इस सेट को k नाम दिया गया है, सेट k is equal to open in close interval 0 1 minus open interval 1 by 3 2 by 3। क्लोज इंटरवल 0 1 में से ये निकाल दिया गया है, एंड डिफाइन f from close interval to r। Define f of x is equal to distance of x from this set k for all x belongs to close interval 0 1। किसी भी पॉइंट का एक सेट से डिस्टेंस कैसे मेजर होता है? दिस इज द इन्फिमम ऑफ dxy for where y belongs to k। क्या करना है? किसी एक पॉइंट का एक सेट से डिफरेंस, आपको डिस्टेंस मेजर करना है, तो सेट का हर एक पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करो। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस। ऐसा दिया गया है, जो सेट k है वो क्या है? तो सेट k में इतने पॉइंट्स है, 0 से लेके 1/3 तक, राइट, एंड 2/3 से लेके 1 तक, ये आपके सेट k है। ये जो बीच वाला पोर्शन है ओपन इंटरवल 1/3 2/3 वो k में नहीं है। ओके, तो क्या डिफाइन किया गया है? अगर किसी भी पॉइंट क्लोज इंटरवल 0 1 से में से कोई भी पॉइंट लो आप, तो उसका k से डिस्टेंस, सेट k से डिस्टेंस मींस 0 का डिस्टेंस 0 ही होगा, 1/3 का डिस्टेंस 0 होगा, राइट, एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस, यू नो दिस, मॉड्यूलस ऑफ x minus y where y belongs to k। अगर देखो x k का मेंबर है तो you can take y is equal to x, so x minus x will be 0, so infimum will be 0। अगर कोई भी मेंबर k का मेंबर है तो उसका डिस्टेंस 0 आएगा, राइट, डिफरेंस 0 आएगा। ओके, so what is the question actually? Define like this: f from this is differentiable at all points, f is not differentiable at 1/3 and 2/3, f is not differentiable at 1/2, f is continuous। ऐसा कुछ दिया गया है। नंबर 1 ऑप्शन है f is differentiable at all points, then f is differentiable at all points in open interval 0 1। Number 2, f is not differentiable at 1/3 and 2/3, f is not differentiable at 1/3 and 2/3। नंबर 3 में क्या है? f is not differentiable at 1/2, and number 4 है f is not differentiable but continuous, f is continuous on closed interval 0 1, right। सो पहले देखते हैं कि किसी भी पॉइंट का इस सेट से डिस्टेंस मींस, देखो 0 से 1/3 में से कोई भी पॉइंट लो, लेट मी राइट डाउन फंक्शन हियर। अगर मेरा x है 0 से लेके 1/3 तक का है तो उसका डिस्टेंस इस सेट से 0 ही आएगा, क्योंकि ये सेट का मेंबर है, राइट। यू कैन टेक हियर, अगर x आपका k में है, इस सेट में है, तो you can take y is equal to x, so distance will be 0। 0 का इस सेट से डिस्टेंस 0। सेट का अगर किसी भी मेंबर का डिस्टेंस मेजर करो, जो मेंबर सेट में है उसका उसी सेट से डिस्टेंस 0 आएगा।
0 से 1/3 तक 0 आएगा। अगर मैं ये पॉइंट ले रहा हूं तो वो कहां से डिस्टेंस मेजर करेगा, इन्फिमम कहां से होगा, 0 से 1/3 का जो डिस्टेंस होगा वो इन्फिमम होगा। 0 से ये x में बोल रहा हूँ, x अगर यहाँ पर है तो x का 1/3 से डिस्टेंस मिनिमम होगा। हमें मिनिमम डिस्टेंस मेजर करना है। अगर x 2/3 के नजीक है तो x का डिस्टेंस 2/3 से मिनिमम होगा। इन्फिमम मींस व्हाट, ये 2/3 से मिनिमम होगा। अगर बीच वाला पॉइंट है तो दोनों से सेम होगा। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा 1/3 प्लस 2/3/2 दैट इज 1/2। 1/2 मिड पॉइंट है, यानी कि 1/3 से लेके अगर आपका x 1/2 तक है तो ये डिस्टेंस विल बी मिनिमम, और ये डिस्टेंस x बड़ा है 1/3 छोटा है तो x minus 1/3, इनफैक्ट मॉड्यूलस ऑफ x minus 1/3, राइट। ओके, अगर x 1/2 से बड़ा है और 2/3 से छोटा है, ये पोर्शन में आ रहा है यहाँ पर, तो 2/3 से उसका डिस्टेंस कम होगा, सो 2/3 माइनस x होगा। डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। एंड अगेन 2/3 से 1 के बीच में है तो डिस्टेंस विल बी 0। यू कैन पुट लेस और इक्वल हियर, लेस और इक्वल हियर, क्योंकि 2/3 के ऊपर 0 आएगा। सो यू कैन चेक, जो देखो ये 0 से 1/3 में कांस्टेंट फंक्शन है, सो इट इज कंटीन्यूअस। 1/3 टू 1/2 में इट इज पॉलिनोमियल, सो इट इज कंटीन्यूअस। 1/2 टू 1/3 में कंटीन्यूअस, 2/3 टू 1 में कंटीन्यूअस। लेट्स चेक एट 1/3। एट 1/3 left hand limit will be 0, right hand limit at 1/3, if you put x is equal to 1/3, 1/3 minus 1/3, this is 0. So left hand limit and right hand limit at 1/3 it is 0. So function is continuous at 1/3 also. Okay, is it continuous at 1/2? So what is left hand limit from 1/2? It is 1/2 minus 1/3, right? So let us check first limit x tends to 1/2 from minus side, x less than 1/2, तो क्या आएगा, x minus 1/3 में रखना पड़ेगा, it is 1/2 minus 1/3, 3 to the 6 will be LCM 1/6 answer. Right hand limit from 1/2, limit x tends to 1/2 plus it will be what, 2/3 minus x रखना पड़ेगा, it is what, 2/3 minus 1/3, right, sorry, 2/3 minus 1/2, x 1/2 के ऊपर जा रहा है। So if you take 6 as an LCM, you will get 1/6. Both are equal, so function is continuous at 1/2 also. Similarly, left hand limit at 2/3 will be what, 0. Left hand limit at 2/3, right hand limit at 2/3 is again 0. So function is continuous at 2/3. So f is continuous on this. Okay, अब हमें क्या लगता है, now we want to check differentiability, right, differentiation, और डायरेक्टली ग्राफ से भी जा सकते हैं। देखो ग्राफ कैसा आएगा, 0 से 1/3 तक, यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 2/3, 0 से 1/3 तक हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, 0 का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ऐसा कुछ है। देन x minus 1/3 का ग्राफ कैसा आएगा, ये 2/3 पॉइंट है, दोनों का ये 2/3 है, यहाँ पर 1/2 है, मिड पॉइंट। 1/2 के ऊपर वैल्यू आती है, कौन सी आती है, हमने अभी ये कैलकुलेट किया था, 1/6 आ रहा था, ऐसा कुछ। तो यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे आएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, राइट। So we can see that it is sharp corner here, it is sharp corner here, it is sharp corner here. So this function is not differentiable at 3 points, 1/3, 1/2 and 2/3. ऐसे ना पता चले तो डायरेक्टली भी हम देख सकते हैं व्हाट इज f dash x। 0 का डिफरेंशिएशन 0, 0 लेस देन x लेस देन 1/3, x minus 1/3 का डिफरेंशिएशन 1, 1/3 लेस देन x लेस देन 1/2, इसका डिफरेंशिएशन -1, 1/2 लेस देन x लेस देन 2/3, दिस डिफरेंशिएशन अगेन 0, x greater than, so we can see that left hand derivative at 1/3 is 0, right hand derivative at 1/3 at 1, both are not equal, so this function is not differentiable at 1/3, similarly not differentiable at 1/2, not differentiable at 2/3. So f is not differentiable at 1/3 and 2/3, like this, these 2 points, right? F is not differentiable at 1/2 also.
f is differentiable at all point is not true. This option is not true. Yes, this is also a nice question. Now let us see one more example and then we will go for Rawls theorem. What is Rawls theorem? Okay, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, then we shall proceed for Rawls theorem. We have to evaluate this limit. Limit n tends to infinity. Evaluate what? Limit n tends to infinity n into f of a plus 1 upon n plus f of a plus 2 upon n plus f of a plus 3 upon n and so on, f of a plus k upon n. There are k terms, right? And minus k times f of a, minus k times f of a, ऐसा कुछ दिया गया है where k belongs to n. Say n is a very large number, n is going to infinity. So here there are k terms, right? First term, second term, third term, k term. This is k times f of a. So let me write it like this. This is same as limit n tends to infinity. Let me write f of a plus 1 by n minus f of a. Right. Then f of a plus 2 by n minus f of a. This plus up to this. What? F of a plus k by n minus f of a. ये जो k टाइम्स f of a था मैंने सेपरेटली दे दिया. वन f of a here, वन f of a here, वन f of a here, वन f of a here. This is n, so I can write it here. 1 by n, 1 by n, and 1 by n. So this is something like f of a plus h minus f a upon h as h tends to 0. So this is limit n tends to infinity f of a plus h minus f a. H is 1 upon n divided by this plus what is this f of a plus h के लिए यहाँ पर 2 upon n है, तो here it should be 2 upon n, right? h is equal to 2 upon n है, तो यहाँ पर 2 upon n होना चाहिए. So I am dividing and multiplying by 2. Similarly next term में क्या होगा, f plus 3 upon n minus f a अपन डिनोमिनेटर में तो 1 by n ही है, हमें क्या चाहिए, हमें 3 by n चाहिए. तो so let me put 3 here and so on. Last term will be what? It is k times f of k by n minus f of a divided by k upon n. डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन में ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर होना चाहिए सेम, राइट? ओके, so now this is what? This is the derivative of f at a. This is f dash a. This is what? This is 2 times f dash a. If you take 2 upon n is equal to h, so f of a plus h by h. Then this is 3 times f dash a and so on, k times f dash a. If you take f dash a common, it will be 1 plus 2 plus 3 up to k. So this is k into k plus 1 by 2 into f dash a. This is the limit, right? Okay. Let's go. What is that? Suppose that 0 is differentiable. Yes. Next we are going to start Rawls theorem. You know what is Rawls theorem? It says that let f from closed interval a b to r be a function such that number 1 f is continuous on closed interval a b. Number 2, f is differentiable on
open interval AB, and number 3 f of a is equal to f of b, f की n points पर value same है, then there exists C in open AB such that what will happen, f dash c is equal to 0, f dash c is equal to 0, और ऐसा एक c मिलेगा. We can see geometrically like this. Suppose we have this interval, this is a, this is b. We have to draw a graph of a continuous function. Suppose this is the f of a. Function is continuous and having this condition, f of a is equal to f of b, means f of b should be somewhere here. We have to draw a graph of a function which is continuous and differentiable from here to here. Continuous means ग्राफ विदाउट ब्रेक किया बिना ही ड्रॉ करना है, एंड डिफरेंशिएबल है मींस यू हैव टू ड्रॉ स्मूथ ग्राफ, राइट. एंगल और कुछ नहीं आ सकता इस ग्राफ में, ऐसा कुछ है. देन देयर एग्जिस्ट सी सच दैट एक सी ऐसा मिलेगा कि जहां पर डेरिवेटिव. नाउ वी नो दैट व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ एफ डैश सी. एफ डैश सी विल गिव यू, सी एफ डैश सी मींस slope of tangent to the curve y is equal to fx at the point c comma fc. x is equal to c रखो तो this point is c comma fc हुआ. f dash c क्या देगा आपको ज्योमेट्रिकली? f dash c will give you the slope of the tangent at this point, and we want that slope to be 0. We know that अगर किसी भी tangent का slope 0 है means that tangent should be parallel to x axis. So you will find such something. Okay, it's not necessary that you will get only one c. You can get more than one c, this type of points, right? So guarantee is there will exist at least one c such that f dash c is equal to 0. Okay, how we will use this result? We are going to use this. Suppose fa is equal to 0, fb is equal to 0. Let me take this. What it says, अगर fa फंक्शन की वैल्यू को एक पॉइंट के ऊपर 0 हो रही है, let me draw again here. Suppose fa is equal to 0 and fb is equal to 0. फंक्शन जो है कोई दो पॉइंट ऊपर सेम वैल्यू ले रहे हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं कि उसका डेरिवेटिव f डैश c भी कहीं पर उनके बीच में 0 होना चाहिए. तो इसको ज्योमेट्रिकली we can state as this, between two zeros. This is a 0. fa is equal to 0 means a is the 0 of f. fb is equal to 0 means b is the 0 of f. So what we can say that, see Rolle's theorem में it is not necessary, it is has to be 0. But if we take this to be 0, then we will get this also. So it says that between two zeros of f, between two zeros of f, there exists 0 of f dash. Or in other words, between, we can write like this, two zeros means what? Between two roots of the equation. Which equation? fx is equal to 0. There always exists a root of this equation. There always exists a root of equation f dash x is equal to 0. हम इसको ऐसे समझेंगे, between two zeros of f there always exists a 0 of f dash. Now let us see its application. So this is a simple application of Rolle's theorem. What it says, find number of roots, real roots of this equation fx is equal to, of this polynomial. Actually this is not an equation, of the polynomial fx is equal to this, right? Okay, so we want to find number of real roots of this polynomial. इसको कितने roots होंगे? Now we know that this is a odd degree polynomial, this is a polynomial of degree 3, right? So here fx, degree of fx
is equal to 3, therefore fx is equal to 0 can have at most 3 roots. इसको ज्यादा से ज्यादा 3 रूट्स हो सकते हैं, 3 रियल रूट्स, रियल और कॉम्प्लेक्स, इट कैन बी मैक्सिमम 3 रूट्स, राइट। और अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में अकर होंगे। इफ z इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल देन z बार, इफ z इज अ रूट of polynomial px or pz, then z belongs to C, then z bar belongs to C is also a root of polynomial, ये होगा ही। अगर किसी भी पॉलिनोमियल को एक कॉम्प्लेक्स रूट है तो उसका कॉन्जुगेट उसका रूट होगा ही, मींस कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स, इट मींस complex roots always occur in pair. तो number of complex root will be always even, either 2 complex हो गए या 4 complex हो गए या 6 complex हो गए, ऐसा होगा, राइट। तो यहाँ पर 3 रूट्स है इसके, इट मींस आइदर एक रूट रियल होगा, 2 कॉम्प्लेक्स होगा या तो तीनों रियल होगा, राइट। इट मींस एक तो रियल रूट होगा, therefore at most 3 roots and 1 root must be a real root, must be real, right। एक रूट रियल होना ही पड़ेगा। अगर दूसरा भी रियल है तो तीसरा अपने आप रियल हो जाएगा, राइट। सपोज दिस फंक्शन हैज 2 रियल रूट्स, let us assume that this function has 2 real roots, okay। Let us take derivative, suppose f has 2 real roots, से इसका नाम दे देते हैं हम, इसके क्या नाम दे देते हैं, x1 and x2, देन अगर 2 रियल रूट्स है तो ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देन f of x1 is equal to f of x2 is equal to 0 हो जाएगा, मींस f of x1 and f of x2 सेम हो जाएगा। and we know that Rolle's theorem says that between 2 roots of x there exists a root of f dash, and therefore there exists c in x1 x2 by Rolle's theorem, therefore by Rolle's theorem there exists c such that क्या होगा, f of c f dash c is equal to 0. Now what is f dash c? Let us check. fx is equal to 5x cube, so it will be 15x square. We are talking about c, so 15c square minus 4c plus 1. This has to be 0. This has to be 0 for some c, but if we find delta of this, what is it? It is b square minus 4ac, which is 16 minus 60, which is negative. So this cannot be 0. Therefore, there does not exist c. समझ में आ रहा है? ये this is a quadratic polynomial. This is a real root if and only if this delta is positive, but this delta is negative. So we cannot find such c. Therefore, there does not exist c such that f dash c is equal to 0. और अगर ऐसा c नहीं मिल रहा है, means ये जो आपने assume किया है कि 2 रूट है, that is not possible, and therefore f cannot have 2 real roots. 2 नहीं हो सकते, बे ऐसा मिलेगा ही नहीं, 2 नहीं है तो 3 नहीं है, right? Okay. नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। क्या दिया गया है, 7x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10, ऐसा कुछ दिया गया है। नंबर 2, यू कैन डू दिस एज एन एक्सरसाइज, फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू 7x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10, ऐसा कुछ दिया गया है।
show that it has exactly one real root. आपको दिखाना है कि इसको exactly एक ही real root है. Okay, let us prove one important result. It is a very small result, but using Lagrange's theorem, we can show that. What is that? Let f from I to bar r be differentiable function. This is a very small. Let f from I is any interval be a differentiable function such that f dash x is non-zero for any x, right? In I, yes, f dash x vanish नहीं हो रहा, एक भी जीरो नहीं है. Then prove that f is 1 1. Then f has to be 1 1. Then f is 1 1. अगर डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का कहीं भी जीरो नहीं हो रहा है तो f is 1 1. इनफैक्ट अभी जो हमने यूज किया ना, यही यूज किया. हमने क्या किया, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल दी गई थी, उसका डेरिवेटिव लिया एंड चेक किया डेरिवेटिव कैन नॉट बी जीरो, सो इट कैन हैव एग्जैक्टली वन रूट. क्योंकि 1 1 है तो एक बार वो जीरो हो गया, फिर अगेन किसी भी दूसरे पॉइंट पर जीरो नहीं हो सकता. सो लेट अस सी दिस. सो लेट x1 x2 belongs to I such that x1 is not equal to x2, right? If you want to prove that f is 1 1, we have to show that f of x1 is not equal to f of x2. Now if f of x1, if possible, suppose that f is not 1 1, if possible, suppose that f of x1 is equal to f of x2. If f of x1 अगर f of x2 हो गया, then by Lagrange's theorem, Rolle's theorem कहाँ अप्लाई करना है, इस इंटरवल पर, क्लोज इंटरवल x1 x2. We suppose that x1 is strictly less than x2, right? Then by Rolle's theorem there exists C in open interval x1 x2 subset of I such that f of C is equal to 0, but f of C तो 0 है ही नहीं, f dash is non-zero, which is contradiction, right? Which is contradiction as, so let me write which contradicts to f of x is not equal to 0 for all x belongs to I. And therefore हमने जो assume किया, this is not possible, and therefore f of x1 is not equal to f of x2, and therefore f is 1 1. ओके, 1 1 का हमें कहाँ जरूरत पड़ेगी, अगर आपको दिया गया है दिस इक्वेशन f of x is equal to 0 and if you know that f is 1 1, then it can have at most 1 0. उसको ज्यादा से ज्यादा एक ही रूट हो सकता है, एक से ज्यादा रूट नहीं हो सकता. So let me write here, if f is 1 1, then the equation f of x is equal to 0 can have at most one real root. एक से ज्यादा रूट नहीं हो सकते. जैसे कि if you take e raised to x, it is a 1 1 function, right? but इसको एक भी रूट नहीं है, ये ऊपर ही रहता है, कभी x एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा. जहां भी वो x एक्सिस को क्रॉस करेगा वहां पर रूट मिलेगा. सपोज ऐसा है तो एक रूट मिल सकता है. सपोज वो नीचे ही रहता है x एक्सिस के, ऐसा कुछ, राइट? तो एक भी रूट नहीं है अभी. तो इट डिपेंड्स. 1 1 फंक्शन है तो इसको एट मोस्ट वन रूट ही मिलेगा. और 1 1 कब होगा, जब डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा तो 1 1 होगा, ऐसा हम बोल रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि डेरिवेटिव जीरो होगा तो 1 1 नहीं होगा. हम क्या बोल रहे हैं, इफ डेरिवेटिव इज नॉन जीरो देन इट विल बी 1 1, राइट? ओके, see, show that each of these equation has exactly one real root. Find number of real roots of the equation. ऐसा कुछ दिया गया है, 3 raised to x plus 4 raised to x is equal to 5 raised to x.
सी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो एनीथिंग. फॉर एग्जांपल इफ यू टेक x इज इक्वल टू 0, हियर 1 + 1 विल बी 2, राइट. तो ये साइड बड़ी हो जाएगी, 1 + 1 2 है, यहाँ पर 5⁻0 इज 1, तो 2 इज ग्रेटर देन 1. फॉर एग्जांपल इफ यू टेक x इज इक्वल टू से 2, तो 3 square plus 4 square is equal to 5 square. This is true. 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square. तो x is equal to 2 is the root. Then आगे क्या होता है? If you take x is equal to 3, this side will be greater than. तो कुछ भी हो सकता है. कितने roots हो सकते हैं? We don't know. So let us find out here. Let us take this here. Let here the given equation is this 3 raised to x plus 4 raised to x is equal to 5 raised to x. This will imply this minus 5 raised to x is equal to 0, right? If you take 5 raised to x common, what you will get? 3 by 5 raised to x plus 4 by 5 raised to x minus 1 is equal to 0. It is something like this, right? We know that 5 raised to x is non-zero, so this is 3 by 5 raised to x plus 4 by 5 raised to x minus 1 is equal to 0. Let me give this as number 2. जितने रूट ये इक्वेशन को होगा, इतने ही रियल रूट ये इक्वेशन को होगा, राइट? दिस इज ट्रू. मैंने 5 क्यों निकाला? दिस इज अ टेक्निक. किसे टेक्निक बोलते हैं? क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर कॉमन लेना है जैसे कि ये लेस देन 1 हो. इसकी जरूरत क्यों है? Now let us take fx is equal to, let us take fx is equal to 3 by 5 raised to x plus 4 by 5 raised to x minus 1. Then what will be f dash x? F dash x will be a raised to x का डेरिवेटिव, a raised to x log a, right? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? a raised to x log a. इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. नाउ इफ यू टेक पावर ऑफ एनी नंबर, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. पावर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये नंबर पॉजिटिव है, इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता. दिस इज लॉग ऑफ अ नंबर व्हिच इज लेस देन 1. दिस नंबर इज लेस देन 1. 3 by 5 इज लेस देन 1. और किसी भी नंबर 1 से छोटे नंबर का लोगरिथम लेगो तो इट विल बी लेस देन 0. So this quantity is less than 0. Positive into negative is negative. Positive into negative is negative. This will imply f dash x is less than 0 for all x, right? It means अभी जब हमने रिजल्ट देखा कि डेरिवेटिव 0 नहीं हो रहा है, f dash x is non-zero for all x. Strictly less than 0 है means 0 नहीं है, and therefore f is 1 1. और 1 1 है तो इस इक्वेशन को at most 1 रूट हो सकता है, and therefore equation 2 can have at most 1 real root. और एग्जैक्टली आपको प्रिसाइसली पता नहीं है तो आप क्या करोगे? x की दो ऐसे वैल्यू ले लो कि जहां पर एक बार ये नेगेटिव हो रहा हो, एक बार ये पॉजिटिव हो रहा हो. नाउ लेट अस टेक gx इज इक्वल टू, मैं इसको gx बोल रहा हूं, किसको? 3 raised to x plus 4 raised to x minus 5 raised to x, x belongs to R. Then it is a continuous function, right? Then what is g of 0? G of 0 will be 3 raised to 0 plus 4 raised to 0. 1 minus 5 raised to 0 is 1, which is positive. एक बार पॉजिटिव हो रहा है, एक बार नेगेटिव हो रहा है, ऐसा दिखा दो तो इट विल हैव 1 रूट. हमें यहाँ पर क्या मिला है? हमें ऐसा मिला है कि एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 1 रूट है. अभी ऐसा नहीं मिला कि एग्जैक्टली 1 रूट है. देखो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. अगर ये पॉलिनोमियल होती तो हम बोल सकते थे कि एटलीस्ट 1 रियल रूट होना ही पड़ता उसको. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, सो वी कैन नॉट गारंटी दैट ऑड डिग्री की पॉलिनोमियल हो तो भी हम गारंटी दे सकते हैं कि इसको एटलीस्ट 1 रियल रूट होगा. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, राइट? तो हमें दिखाना पड़ेगा कि एटमोस्ट 1 है और एग्जैक्टली 1 है. अब हमने क्या बाउंड मिल गई कि ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है. अब हम दिखा देंगे कि एक तो होगा ही. सो लेट अस टेक g of 3. इट विल बी व्हाट? 3 cube plus 4 cube minus 5 cube, which is less than 0. क्योंकि 3 cube is 27. You can calculate this. 4 cube is 64 minus 125. This is negative, right? And negative है तो g is continuous
वो पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है, कंटिन्यूअस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कंटिन्यूअस है, तो बीच में कहीं पर जीरो होगा बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, एंड देयरफॉर G must have a real root. तो एटमोस्ट वन होगा, ज्यादा से ज्यादा एक होगा, और एक होगा उसकी भी गारंटी है। एटमोस्ट वन का मतलब या तो एक होगा या तो एक भी नहीं होगा, लेकिन एक भी नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, राइट। सो ये रूट, कितने रूट्स मिलेंगे वो तय करना इतना सिंपल नहीं है। इट डिपेंड्स कि किस तरह का फंक्शन आपको दिया गया है, उस वजह से उसी तरह से आपको जाना पड़ेगा। हर बार देयर इज नो यूनिक टेक्निक, बट ऐसे प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इस तरह का इक्वेशन है तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा। Okay, let us see this question. This has been asked in NBHM exam, and this is again a very nice question. What is question? It is given that let Px be a polynomial. Px is equal to this. Let Px is equal to a0 plus a1x plus nx raised to n. This be a polynomial with real coefficients. Let Px this be a polynomial with real coefficients. Pick out the correct statement. Pick out the cases in which the polynomial Px has a root, in which ensures that the polynomial Px has a root in closed interval 0-1. Closed interval 0-1 में इस polynomial को root होगा ही, ऐसा जिसको ऊपर से आप बोल सको ऐसे केसेस पिक करना है। नंबर 1 में क्या दिया गया है? नंबर 1 दिया गया है a0 is less than 0 and a0 plus a1 plus up to an is greater than 0। पहला केस ये दिया गया है। Okay, so let us discuss about this case. What is a0 here? So a0 is nothing but p0। आप x की जगह 0 रख दो तो this whole thing will be vanish. Only what will be remaining is a0. a0 is p0, p0 is negative, and what is p1? p1 will be a0 plus a1 plus a2 plus n, a0 plus a1 plus up to an. This is positive, means polynomial is a continuous function। 0 के ऊपर नेगेटिव है, 1 के ऊपर पॉजिटिव है, कंटिन्यूअस है तो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी है, 0 ऊपर नेगेटिव है, 1 के ऊपर पॉजिटिव है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो इट विल क्रॉस द एक्स एक्सिस, और जहाँ पर एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? रूट मिलेगा। एंड देयरफॉर बाय intermediate value property Px has a root in between these 2 points. Which 2 points? 0 and 1. So this case, ये केस में रूट मिलेगा। ओके, ऑप्शन बी में क्या दिया गया है? ऐसा कुछ दिया गया है a0 plus a1 by 2, a0 plus a1 by 2 plus a2 by 3 plus n by n plus 1, an upon n plus 1 is equal to 0। ऐसा दिया गया। ए केस है तो इसको रूट मिलेगा कि नहीं? ओके, तो देखो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दी गई थी उसके जैसा ही यहाँ पर कुछ है। क्या है? इसका इंटीग्रेशन जैसा कुछ है। देख रहा है आपको? दिस इज द इंटीग्रेशन आप कर दोगे तो क्या मिलेगा? a0x plus a1x square by 2 plus nx raised to n by 2 and so on, ऐसा कुछ मिलेगा। Okay, so let us consider this polynomial here। Let
fx is equal to, I am taking this a0x, ये केस में a0x, ये कहाँ से आइडिया आएगा, इसके ऊपर से, इसकी पैटर्न के ऊपर से, प्लस a1 x स्क्वायर, a0x प्लस a1 x स्क्वायर बाई 2 plus a2 x cube by 3 plus and so on n x raised to n plus 1 by n plus 1. This is a new polynomial. Coefficients a0, a1, a2, n are this. Right, this is a polynomial. Then what is f of 0? F of 0 is 0. You can see here. Okay. ये दिया गया है a0 plus a1 by 2 plus a2 by 3. This is what? F of 1. F of 1 is what? a0 plus a1 by 2 plus up to n by n plus 1. This is 0 given. हमें क्या दिया गया? ये दिया गया. अगर ये है तो इसका रूट होगा कि नहीं, ये हमें तय करना है. Now f of 0 is 0, f1 is 0, and we know that between two roots of f there exists a root of f dash, and therefore there exists the root of f dash x in close interval 0 1, or you can say that open interval 0 1 में root होगा. What is f dash x? But if you differentiate this, you will get a0. इसका differentiation 2x होगा, 2 will get cancel, you will get a1x. इसका differentiation 3x square होगा, 3 will get cancel, a2x square, and so on. nx raised to n, this is nothing but px. And therefore a केस में भी px has a root in close 0 1, right? Close 0 1 में px को रूट मिलेगा. Okay. नंबर 3 में क्या दिया गया? a0 into a0 upon 1 into 2 plus a1 upon 2 into 3 plus a2 upon 3 into 4 and so on, an upon n plus 1 into n plus 2. This is equal to 0. दो कोई प्रोडक्ट दी गई है. ये केस अगर है तो इस px को 0 1 में रूट मिलेगा कि नहीं हमें चेक करना है. सो लेट अस डिफाइन अ न्यू पॉलिनोमियल. इसके जैसे ही हम जाएंगे, यहाँ पर एक था डिनोमिनेटर में, यहाँ पर दो है, राइट? सो व्हाट वी विल गो फॉर इज, लेट अस टेक gx. सो इस केस के लिए, इसका जस्टिफिकेशन के लिए व्हाट आई एम डिफाइनिंग, डिफाइन लेट gx is equal to this a0 x square से मल्टीप्लाई करूंगा, a0 x square, a0 into x square divided by 1 into 2 plus a1 into x cube divided by 2 into 3 plus a2 into x raised to 4, 3 into 4 and so on, an into x raised to n plus 2. देखो यहाँ पर 0 है तो 2 पावर है, 1 है तो 3 पावर है, 2 है तो 4 पावर है, यहाँ है इसके 2 पावर ज्यादा है, n plus 1 into n plus 2, right? Let this be a polynomial. Then what is g0? Then g of 0 is 0. We can see that if you take x is equal to 0, so g of 0 is 0. Okay. What is g dash 0? G of 0 is not important. What is g dash x? G dash x is equal to, if you differentiate this, 2 will come here. So 2 will get cancelled, x0x upon 1 plus 3 will come here. So a1 into x square by 2 plus a2 into x cube by 3 and so on, an into x raised to n plus 1 by what? n plus 1. n plus 2 will get cancelled. n plus 2 जो आगे आएगा ना वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, right? Yes. This is what? This is g dash x. What is g dash 0? It is again 0. And therefore g dash 0 is equal to 0. Yes. What is g1 here? If we take g1, it will be a0 upon 1 into 2. It is
a0 upon 1 into 2, a1 upon 2 into 3 and so on, n upon n plus 1, and this is given 0, right? n plus 1 and n plus 2, ये 0 दिया गया है. So now g of 0 is 0, g of 1 is 0. Between two 0 of g there exists 0 of g dash, right? So let me write here. In fact, actually ये हम बाद में लिखेंगे. And therefore there exists c in open interval 0 1 such that g dash c is equal to 0. Now what is g dash x? Now g dash x is equal to this. What 2 आगे आएगा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. a0 by 1 plus a1x by 2 x square by 2 a0x plus and so on an x raised to n plus 1 divided by what? n plus 1. This is g dash x. So क्या हो गया देखो ना. Therefore g dash x is equal to 0 and sorry g dash 0 is equal to 0. 0 के ऊपर x is equal to 0 लोगे तो 0 हो रहा है and g dash c is equal to 0 तो हो रहा है. ऐसा है. यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, right? g of 0 भी 0 है, g of 1 भी 0 है. तो between two zeros of g there exists 0 of g dash. तो एक मिल गया यहाँ पर. यहाँ पर क्या हो रहा है? g dash 0 हो रहा है, g dash c भी 0 हो रहा है. Between two zeros of g dash there exists 0 of g double dash. तो एक ऐसा d मिलेगा. Therefore there exists d in 0 and c. Between two zeros of any polynomial there exists 0 of its dash. There exists d such that what? G double dash d will be 0. And what is g double dash c? And what is g double dash x? Let me write. G double dash x is nothing but if you take, this is the first derivative, if you take second derivative you will get px, because here it is a0 plus a1 plus a2 and so on. This is px. g double dash का x0 है means px का x0 है. Therefore a केस में भी px को x0 मिलेगा. This is again interesting example. We are just using Rolle's theorem on different polynomials, right? Okay. So यहाँ तक हम रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लाग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम एंड उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे. लेट्स स्टॉप हियर.